स्टेशन हैज अ डेली लोड साइकिल एज कि टाइम्स दिया हुआ है इन आवर्स, है ना, 24 आवर्स में, यानी कि 0 से 6 आवर्स तक 40 मेगावाट का लोड रहता है उस स्टेशन पे। 6 से 10 आवर्स पे 50 मेगावाट्स का रहता है। 10 से 12 आवर्स पे 60 मेगावाट्स का लोड है। 12 से 16 आवर्स पे 50 मेगावाट का लोड है। 16 से 20 पे 70 मेगावाट्स का लोड है। और 20 से 24 पे 40 मेगावाट्स का लोड है। हमें क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ द लोड कर्व एंड द लोड ड्यूरेशन कर्व एंड डिटरमाइन मैक्सिमम डिमांड, यूनिट जनरेटेड एंड द लोड फैक्टर। ओके, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसका जो सोल्यूशन है, कुछ इस प्रकार से है। ये उसका लोड कर्व मैंने बनाया हुआ है, जैसे कि हमको दिख रहा है। हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे टाइम कर देते हैं और वाई एक्सिस पे मेगावाट, है ना, जो भी इसका बेसिकली वॉट एवर इज द मेगावाट कंजप्शन वी विल राइट इट ऑन द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है ये वाला जो 0 से लेके 6 आवर्स तक का जो कंजप्शन है वो कितना है, 40 मेगावाट्स का, ठीक है। और 6 से 10 पे कितना है, 50 मेगावाट्स का। ये हम लोड कर्व कर रहे हैं, तो लोड कर्व में जैसा दिया रहता है उस हिसाब से हमको बनाने का रहता है। फिर दूसरा है 10 से लेके 12 आवर्स पे कितना लोड है इस स्टेशन पे, 60 मेगावाट्स का। ओके, देन फॉर द 12 to 16 आवर्स वी हैव 50 मेगावाट्स लोड। Then for 16 to 20 we have 70 megawatts load on the substation, and then on the 20 to 24 hours पे 40 मेगावाट्स का लोड है, ठीक है। इस प्रकार से इसका लोड कर्व हम प्लॉट कर सकते हैं। और फॉर द लोड ड्यूरेशन कर्व हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कितने कितना लोड कितने कितने आवर्स के लिए रहेगा, है ना। तो लोड इन मेगावाट्स लिख लेंगे हम। सबसे पहला हाईएस्ट लोड कौन सा आपका, 70 मेगावाट्स का है। और ये हमको पता है कि क्वेश्चन में गिवन है कि ये कितने 16 से 20 आवर्स के लिए, यानी कि 4 आवर्स के लिए 40 मेगावाट्स का लोड ऑन द स्टेशन है। तो हमने ड्यूरेशन इन आवर्स तो 4 आवर्स लिख दिया है, ठीक है। 60 एंड अबाव कितना है यहाँ पे, ये तो 2 आवर्स है, ठीक है। और 60 एंड अबाव में ये 4 जो आवर्स इसका है ये भी कैलकुलेट हो जाता है। तो नेट कितना हो जाएगा आपका, 6 आवर्स के लिए 60 एंड अबाव का लोड है उस पावर प्लांट पे। 50 एंड अबाव ये है आपका 6 to 10, यानी कि यहाँ पे आपका 4 आवर्स हो गया ये, ठीक है। और ये 6 प्लस 4 आपका हो गया 10, ठीक है। तो नेट 14 आवर्स। नेक्स्ट हमारा जो 40 मेगावाट्स का लोड है वो कितना का, 14 आवर्स के लिए तो रहेगा ही, साथ ही में यहाँ पे हमको दिख रहा है ये कितना है, 6। और ये यहाँ पर कितना है आपका, 6 प्लस दिस इज हाउ मच, 4, सो दिस इज 10। तो 10 प्लस 14 इज 24 आवर्स के लिए आपका ये पूरे में अपन को देख रहे हैं 40 आवर्स का लोड तो है ही, 40 मेगावाट का लोड तो 24 आवर्स के लिए है ही इस पर्टिकुलर स्टेशन पे। तो इसको देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, लोड ड्यूरेशन कर्व जो रहता है वो हम प्लॉट कर लेते हैं। जो लोड ड्यूरेशन कर्व होता है उसके अंदर क्या होता है, हाईएस्ट लोड को सबसे पहले हमको प्लॉट करना रहता है, मतलब कि 70 मेगावाट से सबसे पहले लोड रहेगा। देन हमारा नेक्स्ट लोड कितना हो जाएगा आपका 60 मेगावाट्स का। ये हमको पता है कितने घंटे के लिए था, 6 घंटे के लिए था। तो ये हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ये 6 to 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद वाला कितने था आपका, 50 मेगावाट्स का होगा। 50 मेगावाट्स का 14 आवर्स के लिए चलेगा। और उसके बाद आपका कितना है, 40 मेगावाट्स का लोड। तो ये आपका ये जो बनता है ये क्या होता है, हमारा लोड ड्यूरेशन कर्व। ड्यूरेशन कर्व, तो इस प्रकार से हम लोड ड्यूरेशन कर्व बना लेते हैं। और फिर इसके बाद हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट यू हैव टू डू इज यू ऑल्सो हैव टू फाइंड आउट what is the मैक्सिमम डिमांड फॉर दिस पर्टिकुलर लोड। हमें ये भी डिटरमाइन करना है मैक्सिमम डिमांड कितना है इस लोड के, इस मैक्सिमम डिमांड कितना है इस पावर प्लांट पे। मैक्सिमम डिमांड तो हमको दिख ही रहा है लोड ड्यूरेशन कर्व को देखते हुए, दैट द मैक्सिमम डिमांड हियर विल बी नथिंग बट equals to maximum demand on the generating station will be equals to 70 megawatts, ठीक है। सेकेंड थिंग हमको जो डिटरमाइन करना है वो है वी हैव टू फाइंड आउट द यूनिट्स जनरेटेड।
Then units generated during 24 hours. 24 hours, which is equals to, I will write it here. It is how much? 70 was there for 70 megawatts was there for 4 hours. 60 megawatts was there for 2 hours. Then your 50 megawatt is there for 8 hours. Then 40 megawatts is there for 10 hours. 40 megawatts. So when you do the calculation, okay, so when you do the calculation, the value you will get is, we can do this here. It is how much? 70 into 4 plus 6 into, sorry, 60 into plus, ओके 6 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 6 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 हो जाएगा। 60 इंटू कितने आवर्स के लिए? 2 आवर्स के लिए ये, प्लस फिर कितना है? 50 मेगावाट से कितने आवर्स के लिए? 50 मेगावाट से हमारा 8 आवर्स के लिए 50 मेगावाट्स है ना। नेक्स्ट 8 आवर्स हो गया, फिर प्लस 40 मेगावाट्स। 40 मेगावाट्स कितनी देर के लिए प्रेजेंट है? 0 से 6 आवर्स के लिए यहाँ पर है, और लास्ट में 20 से 4 आवर्स, यानी कि टोटल हमारा 10 आवर्स हो रहा था, है ना, हमने कैलकुलेट किया था, तो 10 आवर्स। इसको हम नेट कर देंगे तो 1200 हमारा वैल्यू आ रहा है, 1200। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1200 megawatt is the number of the units generated. The next thing which we have to do here is, what we have to do is, we have to uh, find out the average load. The average load, which is equals to energy generated in megawatts during the day divided by 24। हमको पता है इसका फॉर्मूला, एनर्जी generated, energy generated in megawatts during the day divided by 24, and a number of hours of that particular day, which is equals to number of how much is the energy generated. The number of the units generated is nothing but 1200 divided by 24. You will get the average load here is how much? It will come to be 50 megawatts, है ना। Next, the fourth thing which you have to determine was the load factor. The load factor, we know the formula. It is nothing but the average load divided by the maximum demand. So we have found out both. Average load is how much? 50 megawatts, and the maximum demand is nothing but 70 megawatts. Divide this, you will get the answer as 0.714 or 71.41%. This is the load factor. Okay, so this was first question for today. The second question, which is here given here, find the loop reactance per kilometers of a single phase overhead line having two conductors, each of 1.21 centimeters diameter. The spacing between the conductors is 1.25 meters, and the frequency is nothing but 50 hertz. Okay, so how are you going to solve it? We know that what we have to find out, we have to find out the loop reactance. For that we have to find out nothing but the, what is the loop inductance. The formula for the loop inductance is a loop. Now we write the formula as 4 into 10 to the power minus 7 ln d upon r dash. This is the formula. Okay, and r dash is nothing but, what would be r dash? It will be 0.7788 into the radius.
Radius is how much? Here it is given 1.213 centimeters is nothing but the diameter. So you have to convert it into the radius, that is 1.213 divided by 2. Okay. So when you do it, we will get the answer here as, let me just do it. 0.7788 into 1.213 divided by 2. We get the answer as 0.47234. 0.47. Okay, I'll write it. 0.47234 into 10 to the power minus 2 will do for getting in the meters. Okay. So this is your R dash. Okay. And distance D it is given. Distance D here is given. How much it is? D is equals to, it is given, the spacing between the conductors is 1.25 meters. And here it is given the numerical 1.25 meters. Just put it this, then you will get the loop inductance. 4 into 10 to the power minus 7 ln bracket 1.25 divided by 0.47 0.4723 multiplied by 10 to the power minus 2. So you will get the answer. You will just do it. It is 4 into 10 to the power minus 7 multiplied by bracket, how much it is, 1.1.25 divided by 0.00472 bracket close, and this is your ln. Just multiply it. You will get the answer as 7, right? So we can write this as, we can write here it as 22.31 into 10 to the power minus 7, that we can do 10 to the power minus 7 henries per meter. Okay, and if you have to convert it into henries per kilometer, so you can do it 22.31 into 10 to the power minus 4 henries per kilometer. You will get the answer. Next we have to find out the loop our thing was we have to find out the loop reactance. Okay, so the loop reactance here is how much? The loop reactance X, it is nothing but 2 pi f into L. So we have 2 pi is 100 into pi into L, here is how much? 22.31 into 10 to the power minus 4. Just calculate it. 100 into pi into 22.31 into 10 raised to the power minus 4. Get the answer as 0.7008. The answer is just a minute, 0.7008 ohms per kilometer. This is your loop reactance. Okay, so the second question is also completed.
Next is the third question is very simple. This is nothing but your ABCD parameters है ना, which is the unit number 3 question. Okay, here what you have to find out, it is given, this is the performance parameter of a transmission line है ना. इधर क्या दिया हुआ है, द एबीसीडी कांस्टेंट ऑफ अ थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन आर. एबीसीडी कांस्टेंट्स में ए और डी की वैल्यू कितनी है, 0.8 ∠1 डिग्री, बी की वैल्यू 170 एंगल 85 डिग्री, सी की वैल्यू 0.002 एंगल 90.4 ओम्स मोर. The sending end voltage is 400 kV. Determine the receiving end voltage under no load conditions. ठीक है, बताया ये गिवन है हमको. तो solution, we know the equation of ABCD parameters is Vs is equals to A into VR plus B into IR है ना. A क्या होता है, A is nothing but the open circuit reverse voltage ratio. B क्या होता है, शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर इम्पिडेंस. अब हमको बोला गया है कि इसमें द रिसीविंग एंड अंडर नो लोड कंडीशन. नो लोड कंडीशन का मतलब क्या होगा कि सेंडिंग एंड वुड बी ओपन. सेंडिंग एंड ओपन है तो दैट मीन्स दैट एट नो लोड, that is at no load, we our IR would be equals to 0. So when our IR is equals to 0, so we can say that the sending end voltage Vs is equals to A into VR naught है ना, receiving end voltage when open circuited. So we can write VR naught is nothing but Vs upon A. Here in the question Vs is given how much, 400. 400 divided by A's value is given, magnitude we have to take, so it is 0.8. So calculate that. It is 400 divided by 0.8. 500. Okay, so we know that this is the 500 kV. This 500 kV is your required answer. Yeah, 500 kV is nothing but the receiving end voltage under no load condition. Okay, receiving end voltage under no load condition, VR not is nothing but 500 kV. Very simple question.